based upon their structure. Unipolar, Yes. bipolar, Yes. and multipolar. Multipolar. And what are the three types based upon their function? Sensory neuron or afferent neuron. Second is associated neuron. Third is motor or efferent neuron. Okay. Did you read after going home? Yes. How much time? Almost 45 minutes. 45 minutes you gave to the 4-5 pages, right? Did you go home and read physics also? Yes. How much time? 20 30 minutes. Oh. Sit down. Yes, sir. First page. What is a gland? How did I describe a gland? Correct. Okay. Correct. What is the meaning of the word secretion? Synthesis plus release is called as secretion. Synthesis as well as release is called as secretion. If a gland does the secretion into the blood, what is such a gland called? Do you know examples of endocrine glands? Pituitary gland. Any other example you know from school? Very good. Where is it located? Are you talking about thyroid or thymus? For immunity. Okay. One more, if you remember. Thyroid. What is thyroid gland responsible for? Thyroid. Okay. Very good. Chirag. I am looking at a cell under the microscope, a tissue under the microscope, and I see that the cells are flat. Okay? And I see that the nucleus is in the center and the boundaries are irregular. Which tissue am I looking at? Squamous epithelium. What do you mean by diffusion boundary? अगर आपसे कोई 10th standard का student पूछता है कि what is the diffusion boundary? तो आप उसको कैसे आंसर करोगे? What is the diffusion boundary? Yes, Atharva, can you tell me? If somebody is asking you what is the diffusion boundary, how will you answer him? What is the diffusion boundary? Yes, Chirag, tell me. Release of chemicals from higher concentration to lower concentration. That is called diffusion. Movement of molecules from higher concentration to lower concentration. So when you say squamous epithelium functions as a diffusion boundary, what do you mean by that? That it is a boundary as well as it allows what? Diffusion. Correct or not? Okay. Yes, there is Sanchita, right? Your name? Okay. Can you tell me the different locations where the squamous epithelial tissue is present? Right? Urgali? Squamous epithelium is present in alveoli and Bowman's capsule in nephron. Only two, I had mentioned a few more also. Don't remember? It is located in the blood capillaries where it is called as the endothelium. It is also located in the Bowman's capsule that you already told me. Okay? And alveoli of the lungs. And one I did not mention yesterday was the lining of the coelom, peritoneum of the coelom. Okay, have you heard of this word coelom, bachelo? No? Peritoneum ये word नहीं सुना ना कभी आप लोग ने? ठीक है.
बैठिए सर. Gradually you will be punished if you don't answer. You got my point? Make it a point to study and come every day. Now कुछ लोग एक और लोकेशन है. आगे चल के ना अपने को समझ में ये आना चाहिए. मतलब कैसे हम धीरे धीरे मे बी डायरेक्टली इस टॉपिक पे उन्होंने वर्ड मेंशन नहीं किया है, बट जिसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं अलग अलग ह्यूमन सिस्टम्स, एक बेसिक नॉलेज है कि मेरे बच्चे को मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरिटोनियम, द कांसेप्ट ऑफ द पेरिटोनियम. Okay, so I'll give you a basic idea of what is the peritoneum first. Huh? It's a new word for all of you, right, Mochilo? I'm asking you a question. You knew this already? So I'm asking you, is it a new word for you? Yes. Yes. What's the new word? Peritoneum. Peritoneum. Okay. So let me consider this to be a human being, and I'll say that I'll divide the human being into different compartments. The thoracic and the abdominal compartment by a muscular tissue which is called diaphragm. So this is the thoracic cavity, जहाँ पे आपका heart और lungs होंगे, and this is the abdominal cavity, जहाँ पे आपके अलग-अलग क्या होंगे organs होंगे, और उसमें होगा आपके elementary canal. एब्डोमेन में आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है. ये वर्ड सुना आपने एलिमेंट्री कैनाल? इस एलिमेंट्री कैनाल में आपके पास आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे ऑर्गन्स है कि नहीं वो? चलो यस. ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल. एंड ये जो है साइड में जिसको मैंने रेड में मार्क किया, ये आपका एब्डोमिनल वॉल है. आपका एब्डोमेन का क्या है? वॉल. समझे एब्डोमेन का वॉल मतलब क्या? जहां पे हम सब लोग ने अपना शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह पहना हुआ है, ये जो अपन बाहर दिखता है, अगर हम शर्ट निकालेंगे तो हमको जो दिख रहा है वो कौन सी वॉल है? अपनी एब्डोमेन की वॉल, जिसमें मसल्स है, स्किन है, फैट्स है ना. और ये है कौन सा कैनाल मैंने बोला बच्चा? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट. ठीक है, तो ऐसा इमेजिन करिए किड्स कि ये एक ट्यूब है, कौन? एब्डोमिनल वॉल. और ये एक दूसरी ट्यूब है, कौन है वो? एलिमेंट्री कैनाल. तो मैंने कितनी ट्यूब्स इमेजिन की? एक ट्यूब या दो ट्यूब? और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर है? Give me yes or no? Yes. एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर है. What do you mean by that? That the elementary canal is the outer tube or inner tube? Inner tube. And the abdominal wall is the Outer tube. So how many tubes do you have? Two. This is called tube within tube. What do you call it? Tube within tube. So you have a tube which is called elementary canal, and the other tube is what, Bachalo? Abdominal. So one tube is inside the other tube. This is called tube within tube body plan. क्या कहते हैं उसको? Tube within tube body plan. Did you understand this point? क्या कहा मैंने? What is this body plan called? Tube within tube body plan. Tube. C के ऊपर dash मतलब with. This is tube within tube. Did my class follow up to here at least? Yes. Yes or no, all of you? Yes. Okay. So human beings have which body plan? Tube Tube within tube body plan. And in this tube within a tube body plan, I see a space between the two tubes. Can I say this is the space between the two tubes? Yes. And this space is called your body cavity or an adult coelom. ठीक है? What do you call this? Body cavity or adult coelom. Adult coelom. And these are the different organs
which are present in the body cavity or the adult cecum. And I'll call these organs as the which organs? Visceral organs. Okay? And look guys, do you see the visceral organ is covered by a blue layer? Give me yes or no? Yes. As well as, can I say even your body cavity is covered by a blue layer? है ना? Now, the blue layer which is covering the visceral organs is called as the inner peritoneum. And do you see this one? This is called as the outer peritoneum. Okay? And these peritoneum is made up of which epithelium? It is made up of a squamous epithelium. And in some books it is also called as the mesothelium. All are these new words. So that squamous epithelium is also called as the mesothelium. So we began our lecture with an important concept builder. That I have explained to you the idea of the peritoneum. So I said that I divided the body into the thoracic cavity and the abdominal cavity with the help of dash. Diaphragm. Then I told you in the abdominal cavity I see the presence of one tube or two tubes? Two tubes. Which is the outer tube? Loudly. Which is the inner tube? Right? So is it tube beside a tube or tube within a tube? Tube within a tube. What is the space between the two tubes called? Or can I say the adult coelom is lined by epithelium? Yes. Which color I have shown it? Blue. Should I call it inner peritoneum or outer peritoneum? Outer peritoneum. And within that peritoneum, do I see some organs over there? Yes. What are those organs called? Visceral organs. And within the visceral organs, what do I have? The surrounding the visceral organs, what do I have? Inner peritoneum. Is the point clear, everyone? Yes. And this peritoneum is made up of which tissue? It is made up of squamous epithelium. Correct? Last bench. Boys. Yourself. Pass. Yesterday was your first lecture, right? And you wrote down about the squamous epithelium. आपने लिखा squamous epithelium के बारे में? तो आप मुझे बता सकते हो कुछ एक दो फीचर्स squamous epithelial cells के बारे में? क्या उनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है कि नहीं होता है? बोलिए। क्या नाम है आपका? आर्यन। आपने बुक खोला घर में जाके? आर्यन? नहीं खोला? क्यों? The other corner. We studied squamous epithelium yesterday, right? Can you tell me some features of the squamous epithelium? You were writing notes yesterday, right? So some points of the squamous epithelium you must have written. Atharva, don't give me that body language. Stand up.
Tell me some features of the squamous epithelium. Sit down, both of you. Squamous epithelial, when we look at it from a top angle, it looks like a walking path. So it's called the pavement epithelium. When you look at it from the dorsal view, don't say top angle. When we look at it from the dorsal view, we see that the cells have margins which are zigzag and they are interlocking. So it gives the appearance of a walking path. That is why it is called the pavement epithelium. Yes. Next. They are flat. They're completely flat. Oh. And cover hollow organs from both inside and outside. Okay. And they form a diffusion boundary. Okay, so. Okay, so we stopped with glandular epithelium last time. Right, Mujhlo? Okay. Now, here's another tell me. What are these goblet cells? You remember goblet cells I mentioned yesterday? Can you tell me about them? What are these goblet cells? They secrete mucus. They secrete mucus in the stomach, okay? And they are which type of cells? Cuboidal cells or columnar cells? Yes, dear. Cuboidal cells or columnar cells? What is your answer? Columnar? Pakka. Sit over. So, goblet cells are which cells? Cuboidal or columnar? Columnar cells. है ना? Okay. So now let us continue with the which epithelia? Compound epithelium. Okay. So what's the compound epithelium? Is it single layer or is it multi-layer? Multi-layer. Will all the cells touch the basement membrane? No. No. So we see that there is a basement membrane. Kids, basement membrane is cellular or non-cellular? Non-cellular. Okay. Now look at these cells. They're tall, column-like cells which touch the basement membrane, and they undergo cell division, resulting in the formation of a layer of cells above them. Okay, and the top layer of cells, it has become flat and it has become squamous. Okay. So how many layers of cells do you see? Which one? Three types of layers. Okay. This will be the top layer. This will be the middle or intermediate layer, and this will be the most proximal layer. याद आया word proximal? Proximal मतलब दूर वाला कि नजदीक वाला बच्चों? नजदीक वाला. That layer is called which layer बच्चों? Proximal layer. Right. Now, this proximal layer, what did I say? It undergoes cell division. Right? That is why, as it undergoes cell division, it is called stratum. Stratum means a layer which is dividing. So we call it stratum germinativum. You need to learn this. This for your knowledge. That layer is called as the stratum germinativum. मतलब it keeps on undergoing what? Cell division. Germinate करना मतलब किसी नई चीज को बनाना. That is called stratum germinativum. Because it is undergoing what? Cells. और जैसे से नए cells form होते हैं ऊपर की तरफ, उनका shape change हो जाता है. वही cell जब ऊपर push हो जाता है, तो उनका shape क्या हो जाता है? Change. तो जो top के मैंने cells बनाए हैं, वो कौन से type के बनाए हैं चलो?
कभी कभी उनका शेप क्यूबॉइडल भी हो सकता है, कभी कभी उनका शेप कैसे हो सकता है बच्चों लोग, कॉलमनार भी हो सकता है। सो कौन से अलग अलग शेप्स दिखाते हैं बच्चों लोग, बोलो। कॉलम दिखा सकते हैं, क्यूबॉइडल भी दिखा सकते हैं, एज वेल एज कॉलमनार। और उसके हिसाब से द कंपाउंड एपिथेलियम विल बी गिवन डिफरेंट नेम्स। इट कैन बी कॉल्ड एज compound squamous epithelium, compound cuboidal epithelium, compound columnar epithelium. Understood my point? So on what basis did I give it different names? Depending upon the shape of the cells present at the ocular. ये basic anatomical description समझ में आया सबको? कैसे describe किया मैंने? नंबर 1 मैंने बताया सर कंपाउंड एपिथेलियम इज सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, मल्टी लेयर। द सेल्स which are the most proximal can undergo dash, so I give it a name called stratum germinatum. They result in the formation of intermediate layer which results in the formation of the top layer, and this top layer can either take different shapes. It can be squamous, it can be cuboidal, or it can be columnar. Okay? Okay. Now, their main function, listen to this, their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. What did I say? Their main function is to protect from mechanical and chemical stresses. Okay? Yes, sir. Be ready. You will be standing at least 100 times in a lecture. Stand up. What is your understanding of? क्या समझा आपको? What do you mean by mechanical stress and chemical stress? Try to give you some example of it. Injury and chemical stress मतलब like any place where your body is experiencing a chemical stress. Okay, any other place? Yes, anybody else can answer this? You are right. You are not wrong. Okay, sit down. Yes, over there, girls. You saying something? Yes, Jia. Chemical stress and Adrenaline. Okay, sit down. How about you? Cramps. Okay. Okay. You guys are going in a different direction. Okay. Okay. क्रैम्प्स आया, मसल्स में आया, लैक्टिक एसिड जमा हुआ, ये एक स्ट्रेस है। हम ये बोल रहे हैं कि ये अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस एंड केमिकल स्ट्रेस। तो हमको सोचने का कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए, जैसे उसने लिया क्या कि कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपको बॉडी को बार बार कौन सा स्ट्रेस हो रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेस। मैं आप शर्ट पहन रहे हैं तो आपकी क्लॉथ जो है आपके स्किन के साथ फ्रिक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा स्ट्रेस हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेस। मैंने नाखून मारा आपको, कौन सा स्ट्रेस है बच्चा, मैकेनिकल स्ट्रेस, बरोबर कि नहीं। मैं गरम सूप, बच्चा सूप पी रहा हूँ, मेरे बक्कल कैविटी की ऊपर वो गर्माहट की वजह से केमिकल और केमिकल्स अंदर सब है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, केमिकल स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं। मेरा फैरिंग्स है, उसमें कौन सा स्ट्रेस हो रहा है, केमिकल स्ट्रेस हो रहा है, बराबर है। एक फीमेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड वजाइना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वहां पे मैकेनिकल स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गिव यस और नो, यस, ओके। जहां पे एंजाइम्स, जूसेस, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं और वो अगर वॉल को टच कर रहा है तो कौन सा स्ट्रेस हो रहा है बच्चा, केमिकल स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप क्या चाहते हो, ये केमिकल स्ट्रेस आपके मसल्स को अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं, तो एक कवरिंग लगा देंगे ना हम लोग उसके ऊपर, उस कवरिंग को क्या लगा देंगे, बोलिए हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम। आपको खुद को पता है कि आपकी जो नई नोटबुक है या नई टेक्स्ट बुक है, अगर उसको बार बार कैरी करोगे इधर उधर तो क्या होने वाला है, गंदा होगा, उसके ऊपर भी स्ट्रेस आने वाला है,
तुम्हारा चाय का, इसका, उसका, तो उसको क्या करते हो? ग्राउंड कवर लगा देते हो कि नहीं? ये नहीं लगाते हो? मोबाइल के ऊपर क्या लगाते हो? कवर लगाते हो, जिससे क्या होता है? वो प्रोटेक्ट होता है किससे? ये सब स्ट्रेस से। तो वैसे ही तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन से उसको हमको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो उसको कवर कर देंगे, किससे कवर कर देंगे? कंपाउंड एपिथेलियम से, ताकि उनको किससे बचना पड़े? मैकेनिकल स्ट्रेस है। Other questions, Nirvana? Okay. So I said vagina. You remember vagina? I said that is sound. Okay. During sexual intercourse, it can suffer from which stress? Mechanical stress. Right, Bachcha? Your buccal cavity का lining. Huh? I am chewing the food. I am eating strongly acidic foods. So my buccal cavity is suffering from both stresses. Which stresses? My skin also. Ayana. So I want to cover all these parts with a cover, just like I cover my notebook. So that will be called as what, children? Compound epithelium. That is why the NCERT says that its main function is to protect from mechanical stress and chemicals. Got my point? See, I'm not here to just make you learn things. You have to develop the dimension of how to study biology. Not like in school. Ratta मार के नहीं समझ. Counter question, discussion. I have also made your own thinking should help you to learn biology. सुबह सुबह आप कोई बाबा का प्रवचन सुनने नहीं आए. You got my point? So your mind has to be involved with me. Got it? And you can ask n number of questions. But did you understand this? My first point that I said that it protects from what, Uchilo? Main function is to protect from. So they cover the dry surface of the skin, moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of salivary ducts and pancreatic ducts. Okay? Did you hear all what I said? What is the first thing I said? It covers the dry surface of the skin. Second point, moist surface of the buccal cavity. Then it lines the ducts of salivary glands and pancreatic ducts, and then I said that it also lines the pharynx. So yeah. So where do you find them, Bachcha? The lining of dry surface of what, Bachcha? Skin. Then we said it is lining the moist surface of what, Bachcha? Buccal cavity. Then what did I say? Of the pharynx, and also the inner lining of ducts of which gland, Bachcha? Salivary gland and whom, Bachcha? The pancreatic glands. चलो break up करते हैं. Lining of dry surface of the skin. इसके बजाय emphasis करता हूँ. Lining of the dry surface of the skin. See the surface of the skin. Is it moist or is it dry? Dry. Now see one change that is going to occur. The top layer of your skin shows depositions of a chemical which is called keratin. क्या कहते हैं उसको? Keratin. Okay? As a result of which, the top layer is a dead layer. वैसे भी टॉप लेयर को मरना ही था मुझे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि जितना ऊपर जाएगा उसको डिफ्यूजन के थ्रू खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो टॉप लेयर क्या होने वाला बच्चा? डेड. और उस टॉप लेयर के अंदर कौन सा प्रोटीन यहाँ पे जमा हो गया बच्चों? केराटिन. तो आई विल गिव इट अ न्यू नेम व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रैटम कॉर्नियम. क्या कहते हैं उसको बच्चा? स्ट्रैटम मतलब लेयर, कॉर्नियम मतलब केराटिनाइज्ड. अब अगर इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया बैठता है, फंगस बैठता है, तो क्या उसको खा पाएगा बच्चों? नहीं. What my point? And eventually it will die. Who will die? Bacteria, fungus. They will मर जाएंगे. क्यों मर जाएंगे? क्योंकि उनको टॉप लेयर से कुछ खाना पीना नहीं मिल रहा है. एक तो उसके पास ब्लड नहीं है,
मतलब वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा है, बराबर है ना, कुछ ऐसा खाने के लिए है ही नहीं, केराटिन से भरा पड़ा है. Got it? So can I say it will protect your skin from what? Infections. Right now there are millions of fungus, spores, bacteria, spores in the air. They sit on my skin, but are they able to derive nutrition from it? The answer is no. Okay? कुछ फंगस होते हैं जो केराटोफिलिक होते हैं, जो केराटिन को खा सकते हैं, लेकिन ना वो ज्यादा करके मॉइस्ट रीजन्स पे ग्रो होते हैं, जैसे कि हमारे अंडर आर्म्स, ग्रोइंग रीजन्स, है ना, जहाँ पे हम लोग अपने पैंट्स पहनते हैं, वो एरिया स्वेट की वजह से क्या होता है, मॉइस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे फंगस ग्रो हो सकता है, स्पेशली समर सीजन में जहाँ ह्यूमिडिटी और भी हो, है ना, तो वहाँ पे हम लोग कुछ पाउडर्स वगैरह स्प्रे करते हैं ताकि वो रीजन कैसा रहे, ड्राई रहे. आया बात समझ में आपसे? Then moist surface of the buccal cavity and the pharynx, because you have to protect them from mechanical and chemical stress. And even the lining of the ducts of salivary glands. Yesterday I showed you what salivary gland. I hope my class knows what is pancreas. Yes. Everybody knows pancreas. Just don't say yes. If you say no, I will show it where the pancreas is. Does everybody know where the pancreas is? Yes. Pakka? Where is it? Below the stomach, in the duodenum का C. बराबर है, यहाँ पे जो मैंने स्टमक बनाया, देखो यहाँ पे कहीं स्टमक बना, यहाँ पे इसके नीचे होता है pancreas. So these are the different places where what is present बच्चों, a compound epithelium. The general introduction of compound. Like if you want to learn further in first year medicine, क्या ही पढ़ाएंगे वो लोग, देखो क्या पढ़ाएंगे, वो लोग आपको अलग अलग टाइप्स बताएंगे कि कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम ये कहाँ है, कैसा दिखता है, वो सब. फिर कंपाउंड की बॉडी क्या है, कंपाउंड columnar ciliated क्या है, ऐसा सब. You got my point? And they'll teach you one more epithelium which is called pseudo-stratified, जो अपने syllabus में यहाँ पे नहीं है. हाँ, pseudo-stratified. Pseudo का मतलब क्या होता है, false. Stratified मतलब layers. It has got what? False layers का appearance. Okay? But this is the overall NCERT based content that you should remember. Okay? That I'll quickly revise. See now. Epithelial tissues are tissues which are present upon surfaces. Give me yes or no. Yes. They either face the free surface, their free surfaces either face the outside environment or they face the cavity. The cells are closely packed with very little intercellular space. The cells are flat with interlocking margins. The nucleus is centrally placed. Yes. The cells are laying on a basement membrane. Yes. The cells form a diffusion boundary. Squamous epithelium की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल sorry यार. I shifted to who? Squamous. Okay, before that, चलो epithelium की बात करते हैं. ये जनरल हो गया epithelium का discussion. Epithelial tissues are classified into different types depending upon the structural modification of the cells. It can be squamous epithelium, it can be cuboidal epithelium, it can be columnar. Squamous epithelium के flat cells है, interlocking pavement वगैरह वो सब बताया था यार. It forms a diffusion boundary in the alveoli of the lungs. Then I said the blood capillaries. आज एक नया concept आपको मैंने बता दिया, वो किसका था, peritoneum. ये भी कौन सा epithelium है, squamous epithelium. अलग सा सर cuboidal बताया था कहाँ पे, with microvilli, without microvilli. Microvilli याद है ना बच्चों? That's option. Cilia, movement of कॉलमनार बताया था, कॉलमनार में कॉलमनार माइक्रोविलाई था, कॉलमनार क्या था, सीलिएटेड था. करेक्ट और नो? ओके. वेयर वाज सीलिएटेड कॉलमनार लोकेटेड? ट्रकिया एंड alveolus. Okay. Then we spoke about glandular epithelium yesterday and we ended the lecture with that. I told you what is a gland, unicellular and multicellular. Unicellular का example बोला था मैंने, goblet cell which secretes what we call mucus. Then we spoke about multicellular में endocrine glands and exocrine glands and their types. बराबर? Then today give you concept builder about the peritoneum. We started with which epithelium? Compound epithelium, single layer. I told you multi-layer and all those things. Are you clear with the epithelium, bachcha? Yes. Okay. Now another property of the epithelium is, ठीक, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है कुछ लोग आप लोगों को, which I can answer. Yes, see if you have any question here. Yes, beta. So like main function is to protect from mechanical and chemical stress, right? Right. So what about in diabetes?
comes in chemical disease. No, it comes under a metabolic disorder where your body is not secreting enough amount of a hormone called as insulin. It doesn't come under this. Okay? Sir, our top layer is dead layer. Why doesn't it form dandruff? Okay. It is because of infections of certain funguses. Okay. Some funguses, they are keratophilic. They can attack keratin and derive nutrition out of it. Okay. So if you keep those areas moist, if you wash your hairs but don't dry them properly, you are inviting the growth of fungus because you are giving them moist surface in your scalp. Got my point? So you'll get the growth of those funguses. Okay? And उनका ही body का वो part होता है. ठीक? Okay? So, what is the next idea of the epithelial tissue I'm giving you, Chalo? About the concept of cell junctions. Okay? It's a characteristic feature of some of your tissue systems. Like, we see the presence of junctions in epithelial tissue. We also see presence of some type of junctions in your cardiac tissue. Cardiac tissue is your muscular tissue, right? वहाँ पे भी हम क्या देखते हैं बच्चों? सेल जंक्शंस देखते हैं. लेकिन ये जो सेल जंक्शंस हो रही है बात, वो किसके सेल जंक्शंस की बात हो रही है? कौन सा टिश्यू की बात हो रही है? एपिथेलियल टिश्यू के सेल जंक्शंस की बात. आया समझ सकते हो? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ सेल जंक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय अ सेल जंक्शन? When do you use the word junction, बच्चों? Can you tell me? कब हम लोग ये word junction यूज करते हैं? ट्रेन के टाइम पे. ट्रेन जंक्शन कब बोलेंगे? जब वहाँ पे एक ही जगह की ट्रेन आएगी या बहुत सारी जगह की ट्रेन आएगी? मतलब सेल जंक्शन एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे एक सेल होगा कि एक से ज्यादा सेल मीट करते होंगे. क्या करते हैं? So when the cells meet each other, then their meeting point will be called as a cell junction. Did my class follow what I just said? Yes. I said that if there are two cells, two epithelial cells, let us call them as A and let us call it as B. And both the cells are resting on a membrane. And this membrane is called as which membrane? Basement membrane. Okay, what is the membrane called? Basement. Okay, so can you point out the junctions in this case? Can you point out the junctions in this case? Who can come on the board and point out the junctions in this case? हिंदी में बोलूं, मैं समझा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, काय विचारलं मी हिंदीत विचारलं मला की मला बोर्ड वरती पॉइंट आउट करून दाखवा की जंक्शन्स कुठे आहेत. आपको दिखा रहा है? दिखाइए. So it is between that red one and black one, where they are meeting, that is cell junction. That is cell junction. Do you agree, sir? What? Yes, Sakshi? Any other junction? How much? Do you see only that junction or there is one more junction? One more? कहाँ बचा? No. Have some observation. 90% will observe only that. Okay? But the other 10% will observe one more. And I wanted you to observe that. जिसने ये भी observe नहीं किया ना, he is in ICU. समझे मेरी बात? वो कहाँ पे? ICU. वो भी एकदम क्रिटिकल केयर. जिसने ये ऑब्जर्व किया ना, वो जनरल वार्ड है. और जिसने दोनों ऑब्जर्व किया,
वो गेस्ट है, सबको देखने के लिए आया हुआ है। इसका मतलब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही सही है। जैसे ये वाला ऑब्जर्व किया, सही है, ये ब्लू और रेड, नहीं सॉरी ब्लू है ही नहीं, सॉरी ब्लैक और रेड के बीच में जो है वो भी क्या है, एक सेल, और ये जो है सेल और उसके नीचे कौन है, वो भी क्या है, जंक्शन। सेकेंड वाला जंक्शन कितने जन ने ऑब्जर्व किया था, रेज योर हैंड्स। पक्का बच्चा, वेरी गुड। हाँ बच्चा, हाँ बरोबर आहे, पण आहे जंक्शन, ठीक है। एक टेक्निकल डेफिनेशन में टेक्निकल फॉल्ट निकालने की कोशिश कर रहा है वो। जैसे आपने तो बोला था दो सेल्स के बीच में जंक्शन है ना, लेकिन वो तो दूसरा सेल नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक एपिथेलियल सेल इन्वॉल्व है, एक जंक्शन, ठीक है। ऐसा अपना दिमाग लगाओ बच्चों, ये हिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी हिस्ट्री नहीं है, आपको अपना डोका लगाना पड़ेगा, डोका के साथ इन्वॉल्व हो। हाँ, ये हिस्ट्री नहीं है जहाँ पे मैं आपको जो कि राजाओं की स्टोरी बता रहा हूँ और आप हिस्टोरिकल फैक्ट जैसा उसको जानते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब cell junctions are of different types. Let us talk about the three main types that are mentioned in your text. The NCERT says that the cell junctions in the epithelia are of three types. क्या स्कूल में बताया था कुछ जंक्शंस के बारे में, किसको पता है? नहीं, ये आइडिया ये जंक्शंस होते हैं, नहीं पता आपको? There are tight junctions, gap junctions. Yes, blue shirt, white shirt. You're saying the third one. Yeah, lovely. Please stand up. Other junction. How do you know about that? NCERT read किया आपने? क्या नाम आपका? राज। ये तो हमारे टाइम का नाम है। डैडी को शाहरुख खान पसंद है? नहीं, बैठ जाते। हाँ? ठीक है। तो तीन टाइप के जंक्शंस होते हैं। अभी राज कुछ बताएगा। राज कुछ राज की बात था। टाइट जंक्शंस, then gap junctions, and I have which junctions बच्चा? Adherence junctions, है ना? Yes राज, please stand up. आपने रीड किया NCERT, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, आप जिसमें से बात करिए, अच्छा लगता है आपसे बात करके। बताइए राज, आपण काल वाचलं टाइट जंक्शन बद्दल? Good, I am happy with that. काय समजलं तुला? What a टाइट, तुला जे समजलं सांग, right wrong I don't really care. टाइट जंक्शन मध्ये जो दो सेल्स में जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने देते हैं, मतलब सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बाहर नहीं जाने देते। गैप जंक्शन में जो ट्रांसपोर्ट नहीं, सिर्फ टाइट के बारे में बता कि दोनों सेल एक दूसरे से टाइट, अक्रॉस नहीं जाने देते। किसी चीज को, मतलब अगर 10 सेल है और उन्होंने बीच में टाइट जंक्शन बना दिया, पहले वाला दूसरे में नहीं जा सकता, पहले वाला जो है वो दूसरे में नहीं जा सकता। म्हणजे आता हे 3 सेल्स आहेत, त्याच्यामध्ये टाइट जंक्शन आहे, बरोबर आहे? म्हणजे टाइट जंक्शन कुठे असणार? पहिल्याच्या दुसऱ्याच्या मध्ये आणि दुसऱ्याच्या तिसऱ्याच्या मध्ये। अच्छा अच्छा, तू एक गोष्ट काय समजला की ते इकडे इकडे नाही जाऊ शकणार, ठीक आहे, बरोबर आहे। अजून काय समजलं त्याच्यामध्ये? ते दोघांना जवळ-जवळ करून म्हणजे हां, मग गोष्टी इकडे इकडे जाऊ शकतील का? नाही नाही, पॅक होऊन जाईल। काय होऊन जाईल? पॅक होऊन जाईल। आलं लक्षात? हे किती सेल्स आहे? 3, आणि तिघांच्या मध्ये काय आहे? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन मध्ये काय? प्रोटीन्स आहेत। आलं की लक्षात? त्याच्यामध्ये तिन्ही सेल्स कसे आहेत? They are attached to each other in such a manner that will they allow substances to pass in between them? No. Got my point? And there are proteins around them. There are proteins around them. How did you imagine the tight junction? Tell me. आता जो डोक्याने कसं इमॅजिन केलं? इकडेच थांबवून दिलं तू. Did you imagine in your head? सांग कसं इमॅजिन केलं टाइट जंक्शनला? दो क्लास एक क्लास में वो क्लास में और ये हॉल। ठीक है, और एक अच्छा इमेजिनेशन दूंगा तेरे को। हाँ, आपके घर पे फ्रिज है सब लोग के पास? फ्रिज में टॉप में एक ट्रे होता है जिसमें नॉन वेजिटेरियन लोग अंडा रखते हैं और वेजिटेरियन लोग नींबू रखते हैं। हमारे घर पे आओगे तो अंडे मिलेंगे, ठीक है। और अगर वेजिटेरियन लोग के घर में जाओगे तो वहाँ पे क्या रखते हो? चलो नींबू रखते हैं। आपको क्या रखना पसंद है बताइए? नींबू। हाँ चलो, मुझे कॉमन लेते हैं जो सब खाएंगे, है ना? नींबू ले लेते हैं। अंडे को हटाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है चलो। मैंने क्या रख दिया बच्चा? 5 नींबू रख दिए। तो ये 5 नींबू कौन है? सेल्स है।
और ऊपर में ट्रे रहती है प्लास्टिक की जो हर लिंबू को सराउंड करती है, वो टाइट जंक्शन। वो क्या है? देखो 2D में नहीं इमेजिन करवा पाऊंगा, इसलिए मैंने 3D का आपको क्या दिया, एग्जांपल दिया। 3D का एग्जांपल समझ में आया बच्चा? क्या 3D का एग्जांपल? वो 3D, ये 2D है। 2D में ऐसे ही इमेजिन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने देखो 3D डायमेंशन दिया। क्या कि घर का नींबू का ट्रे, बीच में जो नींबू है वो सब क्या है? सेल्स है, और आजू बाजू में जो प्लास्टिक उसको होल्ड करके रखता है वो क्या है? टाइट जंक्शन। सो इमेजिन 10 सेल्स के बीच में क्या है? टाइट जंक्शन। अब 10 सेल को 2D में तो मैं ऐसे ही करके दिखाऊंगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बीच में क्या? टाइट जंक्शन। हाँ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर तेरे माइंड ने क्या बोला, ये कहाँ पे होते होंगे सेल के बीच में? कौन सा ऑर्गन में तुमने क्या इमेजिन किया, कौन से ऑर्गन्स होते होंगे वो नहीं इमेजिन किया? ठीक है, गुड पॉइंट, सिट डाउन। ओके, रिमेंबर दिस इज द वे आई लाइक टू टीच। Got my point? So you're supposed to read, you're supposed to talk to me while teaching, discuss. Other lectures are you have to be engaged with me. Huh? Don't have the fear of whether you are right or wrong. I don't care a damn about it. मला काहीच फरक पडत नाही की तुम्ही जे बोलताय ते बरोबर आहे की चुकीचं आहे. मला फक्त तुमची काय डेव्हलप करायची आहे? विचारशैली. And for that you need to talk to me, Bacho. You got my point? See now, did I need to teach you tight junction or you understood by this discussion? कुछ समझाना पड़ा मेरे को? कुछ भी नहीं. Now this is with you for your life. अब आपको कभी इसको लर्न करने की जरूरत नहीं. आपको खुद को समझ में आएगा कि टाइट जंक्शन कौन से जंक्शन है? सेल्स के बीच में जो सेल को टाइटली होल्ड करते हैं. And NCERT बोलता है they prevent the leakage across the cell. They prevent the leakage across the cell. मतलब सेल्स के बीच में टाइट जंक्शंस है तो अंदर कुछ अगर लिक्विड होगा तो बाहर लीक हो पाएगा वो? आया ना? Did you understand the tight junction बच्चों? So see this, how it's? If I say like this, the tight junction help to stop the substances from leaking across a tissue. The tight junction helps to what which are prevent what which are leakage across the tissue. Give me yes or no? Yes. Understood everybody? Okay. Now you don't need to know the name of the proteins and all that. Now, you know urinary bladder, everybody? Have you ever heard that the urine is leaking across the urinary bladder? No. So don't you think the urinary bladder must be having some epithelial tight junctions? Stomach मध्ये पण पाणी असतं की पण ते पाणी लीक होतं का वॉल मधून? नाही. आलं लक्षात? हां, एक टाइट जंक्शनचं ब्युटिफुल एक्झाम्पल आहे ब्लड ब्रेन बॅरियर. आपल्या ब्रेन मध्ये असतं, ते तुम्हाला मी नंतर 12वी मध्ये शिकवणार. आलं लक्षात? So this was about which junction? Tight junction. Did you all understand what a tight junction is? Pakka? Okay. What is the second type? Gap junctions. What's a gap junction? As Raj has read it, I think so we will need to discuss it again. Yes, Raj, tell me, what's a gap junction? Gap junction मतलब वो दो सेल में से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करते हैं. दो सेल्स को कैसे रहेगा, उसका डायग्राम कैसा बनेगा? पाइप जैसा. मतलब राज तूने एनसीईआरटी सिर्फ रीड नहीं किया, तूने कहीं कहीं यूट्यूब भी देखा है? नहीं, झूठ मत बोल. नहीं, पक्का? हाँ, यूट्यूब हिस्ट्री वो भी पापा के घर से देखा रहेगा. नहीं, हॉस्टल में रहते. अच्छा अच्छा अच्छा. यंग बच्चों की यूट्यूब हिस्ट्री देखने का डर लगता है मेरे को. I get scared of looking at high testosterone, progesterone, estrogen YouTubes. Okay, good. Sure. Okay. Now in a gap junction, there are these are the proteins. हाँ, उनका नाम नहीं, आपको उनको कनेक्सॉन्स बोलते हैं.
others को connexons. अब don't you think there बीच में gap भी आ गया बच्चों? And there is a protein junction also, which will help in rapid communication between the two cells. मतलब it's like आई आणि मावशी बाजूबाजूला राहतात. हा थोडासा काय पोहे झाले की इकडे जातात. हा इकडची बिर्याणी इकडे येते. हा so there is a rapid exchange and communication between the two cells with the help of what बच्चों? Gap junctions. आलं की लक्षात सर्वांना? पक्का everybody? So what's a gap junction, kids? Yes, they help in rapid communication or exchange of materials between two cells. So I'll read something from gap junctions facilitate. Facilitate अर्थ असतो help. So gap junctions facilitate. What is the meaning of the word facilitate? Help the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules, and sometimes big molecules. Did you understand the statement? I'll read it slowly once again. Gap junctions facilitate. Facilitate अर्थ क्या असतो? Helps the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells. So it connects I with Maushi with the help of certain proteins. So the cytoplasm get connected to each other and it will help with the rapid exchange of large molecules, small molecules between the two cells. Such a junction is called as a gap junction. Here everybody? Pakka? Yes or no? What's the third type? What is the third type of joke? Adherence junction. It's ready, yeah? So once again, adherence junction. Start by adherence junction. दो cells को एक साथ जोड़ कैसे जो? कैसे imagine किया तुमने उसको? हाँ? पक्का imagine नहीं किया? क्योंकि मुझे मालूम है तू अगर imagine करके आंसर देगा तो पकड़ा जाएगा. इसलिए नहीं बोल रहा है क्या? नहीं imagine कर पाया? ठीक है, बैठ जा. तू बोलेगी ना? तू बोलेगी बड़ी बात नहीं उसको. Okay? Can you give an example of gap junctions? Okay. They can be present, okay, between the cuboidal epithelial cells in the nephron. Another example would be the muscular tissue. There is a cardiac tissue. There are gap junctions between two cardiac cells. In a neuron, there are gap junctions between an electrical synapse. So they are found in a epithelial tissue as well as different tissues also. Okay. So next is what we will third. नींद आ रही है ना बराबर से चलो. जो वाली ना ले दो. अरे क्या मजा ना है. वो पहला भाई है ना बड़ा सामान के मस्त एसी है. नहीं कुछ नहीं होगा. चुपचाप सुनना है. ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना टेम्परेचर घटेगा. हाँ बोला जरा. मैं क्या कुछ नहीं होगा. एंजॉय करो ना. कुछ बाहर इतना धूप है. लोग मर रहे हैं धूप से और आपको इतना अच्छा सुविधा है. हाँ एसी है, फैन है, सब कुछ है. और तुम लोग ये मत करो, वो चालू करो. क्या ही है ये? अनसेटिस्फाइड लाइफ. अच्छा भी दो तो बोलते नहीं इतना ज्यादा अच्छा नहीं. बुरा भी दो तो बोलते अच्छा चाहिए. इंसान को चाहिए क्या? एंजॉय ना माहौल. कितना मस्त माहौल है. बाहर देखो कितना गर्मी है. नहीं मानते हो? मालूम है ना? फिर कहाँ करते हो? Adherence. What do you mean by adhere? What do you mean by adhere? Adhere means? What is the meaning of the word adhere? Adhere. 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 Again, what do you mean by adhere? Huh? Third one? Check. Adhere मतलब to hold. Adhere मतलब to what? पकड़ के रखना. जैसे ना टॉर्टोरा बुक ऑफ मेडिसिन एक एग्जांपल देता है.
कि अगर आपका पैंट अगर लूज है, हाँ, तो आप क्या पहनोगे? तो ये बेल्ट क्या करेगा? अधीयर करेगा किसको? पैंट को। किसके साथ? आपके वेस्ट के साथ। तो आपका पैंट नीचे सरकेगा नहीं, बरोबर कि नहीं? अभी वो पता नहीं वो स्टाइल है कि नहीं। मैं जब कॉलेज में था तो एक चप्पल आता था, कीटोज बोलते थे उसको, कीटोज, जिसमें ना ऐसा रहता है। अभी भी आता है ना सैंडल में, वेलक्रो रहता है, वेलक्रो इधर और इधर वेलक्रो रहता है। वेलक्रो में क्या बोलते थे? हाँ, अच्छा ठीक असते थे। Why do you have that ठीक बच्चे लोग? So that the two things will adhere मतलब हाँ। चलो मैंने दो एग्जांपल दिया, आप मुझे एक एग्जांपल दोगे adhere का? सर सोचना नहीं है सर। हाँ, रबर बैंड सर। हाँ, मसल इंजरी को टेपिंग करना, किसको? मसल इंजरी को टेपिंग करना। अच्छा, वो चिपचिपाट ऐसा होगा। हाँ, काइनेसियोटिक। अजून कोणाला टेप मारायचे? चेन, ऐसा चेन। हाँ यार, तो ठीक है, अधीर होता है। मतलब अधीर का मतलब समझ में आ गया सर? ठीक। चलो, now what do you mean by this adherent junction and how do they look like? There are three types of adherent junctions: macula adherens, zonula adherens and hemidesmos. और ये तीनों भी नहीं है यार, ठीक है? अरे वाह, बड़ा लग रहा है ना। ओके, सिंपल क्वेश्चन है हाँ। ओके, बिना याच्यामध्ये एक टाइप पडतो macula adherens, ठीक है? चलो, जी टाइप मी तुम्हाला शिकवतो, इट इज कॉल्ड desmosis. Which type I'll teach you? Desmosis. हाँ, अलग अच्छा? See, who is this? फट करके बोलो। Basement membrane है। Who is this? Who is this? Another epithelial cell. So we have got two epithelial cells, and between the cells there are proteins which will help to hold the cells together, and on the cell membrane there is deposition of proteins which is called as a protein plaque. क्या कहते हैं इसको? Protein plaque. And there are fibrils that come out, and they are attached inside the cytoplasm. Attached inside the cytoplasm. So now, did you understand the case? That there is one cell and there is another cell, and who will hold the cell together? These proteins are there, and then from both the sides, a pressure will be applied by the protein plaque. So अगर ये दो सेल्स एक दूसरे से सेपरेट भी होना चाहते हैं तो क्या होंगे कि नहीं होंगे? कैसे छूट सकते हैं दोनों को? नहीं। क्यों नहीं छूट सकते बच्चे लोग? क्योंकि साइड से कौन प्रेशर दे रहा है? प्रोटीन प्लाक। फिर कौन दे रहा है बच्चे लोग? प्रोटीन्स। As a result of it, the cell will be adhered. Adhered मतलब joined to each other. Are you able to imagine बच्चे लोग? Yes or no? So imagine this one thing with me, huh? Who is this? Cell. ये एक बॉक्स है, उसका एक ही साइड दिखा है। सो गए सब लोग है मेरे साथ? ये कौन है? सेल है। ये सेल की एक वॉल है, मेम्ब्रेन है, हाँ, इसको दिखा रहा हूँ। ये कौन है? सेल। एक ही दूसरा वाला सेल, पकड़ इसको, हाँ। अब बीच में क्या है बच्चों? और बीच में प्रोटीन्स भी आ गई ना वो, और साइड में कौन है? प्रोटीन प्लाक है, आया ना? अगर मैं साइड से ना प्रेशर भी देता हूँ तो क्या दोनों सेल छोड़ के जाएंगे एक दूसरे को? क्यों नहीं जाएंगे? Because there is protein plaque, there is intercellular proteins or fibrils which are keeping the cells attached to each other. That is called as a adherence junction. And the type that I have taught you is called as a desmosis. It looks like a full circle like this, so it's called as a desmosis.
There are different types. This is enough. Did you understand adherence junction, everybody? So can I say adherence junction perform cementing to keep neighboring cells together. I'll read the line once again. Adherence junctions perform cementing to keep the neighboring cells together. Ayana, adherence junctions perform cementing to keep the neighboring cells together. What my point? What do adherence junctions perform? They perform cementing to keep the neighboring cells together. Gap junctions, they help in transfer of materials between two cells. Tight junctions help to prevent leakage of materials. Got it, everybody? So let me give you an example where the adherence junctions of this type are present. Imagine this. Come. There is a heart, human heart. It is made up of what? Muscles. It undergoes rapid contractions and now imagine the heart is covered by an epithelium. The heart is covered by an epithelium. Alaksha, heart is covered by an epithelium. So there are hundreds of epithelial cells. But as the heart is undergoing contractions and relaxations, जो एपिथेलिया है उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या वो एपिथेलिया बीच में से टर करके फट जाता है? So who prevents the epithelial cells from separating? Tight junction or adherent junction? Adherent junction. Tight junction can prevent leakage. They cannot give the strength to hold. शायद बच्चों को आप इमेजिन नहीं कर पाए, ना नहीं कर पाए, इसको तो जनरल टाइट जंक्शन आ सकते हैं। ये कौन है बच्चा? कौन है ये? हार्ट, बराबर है? इस हार्ट के ऊपर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। कौन है बच्चों लोग? एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये है वो एपिथेलियल टिश्यू। आप नहीं समझ, बात ही नहीं समझ रहे हो मेरी। देखो हाँ देखो हम समझ देंगे, ज्यादा मेरा घर पे ही रखा है, टेंशन मत लो। तो ये कौन है बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू है। आया बात समझ में आप सबको? अब ये एपिथेलियल टिश्यू में क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो ये अगर बॉटल बड़ी और छोटी हो रही है तो इस पेपर के ऊपर क्या आएगा? प्रेशर। अब ये क्या है? एक सिंगल पेपर है कि उसके अंदर 1000 सेल्स है, तो नीचे से जब प्रेशर आएगा तो छूट जाएंगे ना वो सेल्स, तो बीच में से क्या होगा? फट जाएगा। ऐसा कभी हुआ है हार्ट के साथ? क्योंकि ये जो लाखों सेल्स है उनके बीच में कौन से जंक्शंस है? जो सब सेल्स को एक साथ क्या करता है? होल्ड करता है। तो जैसे हार्ट का मसल बाहर की तरफ जाता है, ये लोग भी क्या होता है? बाहर जाते हैं, अंदर बाहर। ऐसा Are you able to imagine now? Yes or no? की कधी असं झालं की त्याच्यावर असं फाटून गेला? असं झालं कधी? नाही. I hope you got my point. So who prevents? Hey Dada, who prevents the separation of the cells? Who prevents the separation of the cells? बरोबर है? Who prevents leakage between the cells? तो एक काम करते हैं, टाइट जंक्शंस को उठा के हार्ट के ऊपर डाल दें। होगा फायदा? क्या होगा वो? कैसे बढ़ेंगे? तारबंद करके बढ़ेंगे। क्योंकि उनका काम क्या है? लीकेज को प्रिवेंट करना। क्या मेरी बात नहीं समझ गए? पक्का समझ गए? तो अच्छी बात है। So when two cells meet each other, what is the meeting point called? Cell. Okay. So if we both meet at Starbucks is our junction. Okay.
and the junctions serve one purpose or multiple purpose? Multi-purpose. One purpose is to prevent leakage. Second purpose is rapid transfer of molecules. It connects the cytoplasm of two adjacent cells. Third purpose is it Prevention for separation. yes, and it helps in cementing the neighboring cells together. अलग ही लक्षण से बोलना. चलो, give me your question. So I'm waiting for your question. कौन सी टाइट मशीन से कम है. हाँ वो तो एपिथेलियल अंदर जो है हार्ट का जो मस्कुलर सेल है उसके बीच में गैप है. अगर दो हार्ट के सेल्स के बीच में गैप है तो एक मस्कुलर हो गया कार्डियक मसल हो गया और वो मसल इसको वाला एपिकार्डियम इसको कहते हैं. विसरल लेयर उसको उसके बीच में टाइट मशीन. Okay, बच्चों सुनो भाई हम बैक एक्सरसाइज बाद में करेंगे. बोलो है ना वो टनल देखिए दूसरे क्लोज है ना एकदम ऐसे उसके थ्रू पास होता है ना. The pipe this side, then I want the proteins called connexons. I want to connexons. That's it through pass. चलो एक क्वेश्चन हो गया और अगर ब्रेक की रखते हो ख्वाहिश तो 5 क्वेश्चन करो पूरे. हाँ चला. What is meant by visceral? Basic meaning is internal. What? Internal. But the exact biological meaning is those organs which are present in the coelom are called as visceral organs. In general English, if somebody asks you what do you mean by visceral organs, तो लोग बोलते हैं internal organs. अंदरूनी organs, internal organs are called visceral organs. Correct biological meaning for visceral is those organs which are present in the coelom are called as visceral organs. You got your point? And what is the coelom? Yeah, this is the coelom. चलो दो क्वेश्चन हो गया. थर्ड tight blood vessels में tight junctions हो सकते हैं. Blood vessels. blood vessels में कैपिलरीज वगैरह में रहेंगे ना तो न्यूट्रिएंट्स को पास होने नहीं देंगे ना तो नहीं होना चाहिए वहाँ पे टाइट जंक्शंस. देखो कैपिलरीज टाइट जंक्शन कहाँ मिलेगा? ब्रेन में. Veins और arteries. Their layer is muscular, followed by the top connective muscular internal layer, okay, which is epithelium. Yeah. यूजुअली ब्लैडर में भी टाइट जंक्शन है तो वो फुल होने पर स्ट्रेच होता है. एक मिनट, जरा इसको एक कर दो, पॉज करा दो.